Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Ravi Sir Biology. In this session we will talk about the pregnancy. As we have completed almost all the processes, very few lectures are remain left for this human reproduction chapter, and by these 2-3 lectures we will complete second chapter of class 12th. So today's topic is pregnancy. What do you mean by pregnancy? Means fusion of male and female gamete, means fusion of sperm and ovum takes place in the ampulla, in the oviduct, and in this ampulla, the part of oviduct, fertilization takes place. Inside the ampulla, fertilization takes place, and after fertilization, whatever the product has been produced, like one cell structure which is called zygote, that zygote start multiplying. What will be happen if pregnancy happens? Let me show you. This is the female reproductive part. This is female reproductive part. This is a site. This is a site where fertilization took place. And this is the structure I have made is a zygote. Suppose for a while. This zygote divides. This divides, one cell divides into two cells. These two cells divide to form four cells. Mitotically it will be divided. There will be no any kind of meiotic division. Only mitotic division will be taking place. One cell into two, two cell into four, four cell into eight, and as soon as it enters in 16 cell stage, this is called morula. This will be called morula. 16 cell stage is called morula, which after blastulation, the blastula produced. Blastula, it's a structure which is rearrangement of these cells of morula, right? A trophoblast will be produced. The trophoblast means the outermost covering. Suppose this is a cell, this is a outermost covering of an embryo, and so many cells are here. So many cells are arranged here, and inside it 16 cells to be remember, 16 cells are present. These 16 cells are arranged, and this is a stage of an embryonic development is called morula. morula हमेशा याद रखेंगे 16 सेल स्टेज होता है, तो वहां से यहाँ morula आके और इम्प्लांट होगा. लास्ट लेक्चर में मैंने इम्प्लांटेशन के बारे में भी आपको बता दिया है. For detailed view you need to go to my previous lecture about this implantation. वो यहाँ आएगा और यहाँ पे implant होगा, तो ये implantation होगा. So this is 16 cell stage is called morula. After blastulation means rearrangement होगा सेल का एक प्रॉपर तरीके से. This is outermost cell, this is outermost layer is called trophoblast. This is trophoblast. Arrangement is done, and this is now after rearrangement of morula it become blastula. This blastula after rearrangement it become blastocyst, and this blastocyst differentiation will be occurring in the blastocyst cells, and this will be finally form fetal stage of the embryo. So this is how the development is found in a female reproductive tract, I mean in oviduct to the uterus. मूवमेंट तो यहीं से और यहाँ तक होना है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक होने में ये कंप्लीट स्टेजेस काम आते हैं. तो याद रखेंगे morula 16 सेल स्टेज, blastula का फॉर्मेशन होता है रीअरेंजमेंट ऑफ morula से, and this process is called blastulation, and afterward rearrangement of blastula will be forming blastocyst. Remember one more thing, there will no cell division at all, no cell division to form a blastula from a morula. Means this will remain 16 in number. The cells of blastula are remain 16 in number, as it was the similar to the morula. So this blastula develops into blastocyst, and after differentiation of blastocyst, fetal stage will be produced, and this is how a complete structure, complete development I have shown here.
Now, the important thing is this: in gestation period, what will be happen in gestation period? The fertilization is occurring, and the period of time after fertilization till the delivery of baby is called parturition. Before parturition and after fertilization, this period of time is called gestation period, and this gestation period will be up to 40 weeks. Sorry, I'm sorry about it. This is 40 weeks. 38 weeks almost will be taken to a complete gestation period that tends to 40 weeks maximum. So this is the total period of time of gestation period is almost up to 40 weeks. 40 वीक्स तक का टाइम लगता है ये कंप्लीट ह्यूमन कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड के लिए। और इसमें कोरियोनिक विलाई का डेवलपमेंट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विल बी स्टार्टेड डेवलपिंग। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ पे अगर सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, एंड दिस मेम्ब्रेन विल बी, this is a embryo, so a finger like projection will be start developing towards the embryo, and these finger like projections are nothing but they are called chorionic villi. And the tissues from means this will be started from this this is called embryo and uterine tissue. Some of the uterine tissue will also taking part to join this, so there will be a connection between this embryo to the mother body, and this is why it is called placenta. This is a formation of placenta will be taking place. So this chorionic development, chorionic villi plus uterine tissue, these dissolve to form placenta. ये दोनों mixed होते हैं और placenta का formation करते हैं, and we all know very well placenta is responsible for the nourishment of embryonic developing embryo. This is also helpful in the exchange of gases, in the exchange of materials in between mother and the developing embryo. So this is very important part of this. Now, a placenta which is produced in the mother body is very impressive for the different activities. It's very important need for a developing embryo. What are the need of this? I have mentioned some hormones. The hormones secreted by placenta, mark my word, this is very important point over here which we have to follow for the board examination. The hormones secreted by placenta is very important time to understand. These points will be there definitely for the sure in the board examination or else in some more competitions, and afterward they are waiting for you. Let me explain about these 3-4 hormones. Almost all the hormones you might be knowing, but still we need to explain. The placenta release so many hormones. The very first one is called HCG, chorionic gonadotropin hormone. Chorionic gonadotropin hormone is mentioned always HCG. ये क्या करता है ना, प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन ये नहीं करता, ये स्टिमुलेट करता है बॉडी को, फीमेल बॉडी को, और फीमेल क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करती है प्रेगनेंसी में, और प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया HCG। सेकंड है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL कहते हैं इसको। ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज एक्टिंग एज द ग्रोथ हार्मोन फॉर द बेबी विच इज डेवलपिंग हियर, और द एम्ब्रियो डेवलपिंग हियर। The third is estrogen. The secondary sexual character will be developed, of course, from here. The secondary sexual character, another character will be there. Another important fact: sex organs to be developed. Sex organ development. This is also an important act of this estrogen. So these two functions are there of estrogen. नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन, आपको मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी, एक गर्ल, एक वुमन प्रेग्नेंट कब है, एक लेडी प्रेग्नेंट कब है, कैसे पता चलेगा? जब उसके पीरियड्स मिस हो जाएंगे। पीरियड्स क्यों मिस होंगे? क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन डेवलप हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ओव्यूलेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस नहीं आता, और फिर ये एक सिंबल है कि वो फीमेल, वो लेडी प्रेग्नेंट है।
or by so many tests afterward, which decides that the female how long she is pregnant from. So this is all about the hormones secreted by placenta. Now we have to understand at what stage of embryonic development, what kind of organs, how many organs are developed, what organs are developed at what stage of the gestation period. पूरे complete gestation period को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये याद रखना है, तीन ट्राइमेस्टर्स में पूरे के पूरे, एक्चुअली आप जानते भी होंगे 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ्स, और ये 9 मंथ को कंप्लीट तीन ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया। ट्राइमेस्टर्स मींस 3 मंथ। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स। सो दिस 3 विल बी टोटल 9 मंथ्स। तो वो 9 मंथ के प्रेगनेंसी में फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड इज कॉल्ड सेकंड ट्राइमेस्टर, and third is third trimester. Means we'll talk about the different stages of trimesters. Third trimester. These 3 trimesters will have several development stages. Like I have sketched something here. At first month, the beginning, you know, heart is an organ of our body which starts beating at the development of first month of embryo. माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो पहले मंथ से ही उसका हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है, और वो हार्ट बीट फर्स्ट मंथ से लेके और जब तक वो बच्चा जिंदा होता है, डिलीवरी के बाद भी वो जिंदा होता है, एडल्ट होता है, फिर ओल्ड एज में होता है, कंसिस्टेंटली वो हार्ट बीट करते रहता है, हार्ट एक्टिविटी करते रहता है विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। एंड समटाइम इट हैज बीन रिपोर्टेड द रेस्ट heart take rest in between one systole and one diastole. We will discuss it later. This is not our concern here today. So this is the organ which starts working at the very first month of pregnancy. तो first month के pregnancy में heart sound start हो जाता है, lub dub sound will start working. सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। डिजिट्स मींस द बोन्स अबाउट आई एम टॉकिंग व्हिच आर फाउंड इन द फिंगर और द tarsals. So these are develops limbs and digit development in the second month, and in the third month almost all the organs will be developed, and the further development of these organs will be taking place. Means all the organs will be appeared, and that is why in the third month of pregnancy, or we can say after first trimester, the organs means I mean to say all the organs are developed and sex organs are also developed. और इसीलिए थर्ड मंथ जैसे कंप्लीट होता है, लोग उसका सेक्स टेस्ट कराने के लिए, उसका सेक्स जानने के लिए, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका सोनोग्राफी कराते हैं। अगर वो फीमेल है तो उसका फीमेल फिटिसाइड कराते हैं, किल करते हैं। अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसे देखने को मिलता है, जो कि टोटली बैन होता है, इलीगल होता है, और उसके लिए लीगल एक्ट्स भी हैं, कानून भी बने हैं जिनसे लोगों को जेल और ढेर सारे पैसे भी एज अ फॉल्ट, एज अ जुर्माना दिया जाता है। तो ये थर्ड मंथ में इसलिए होता है क्योंकि थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी में ही वो क्लियर होता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स वो जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, वो एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल बेबी है। तो थर्ड मंथ में सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए, इसीलिए थर्ड मंथ के बाद ही वो सोनोग्राफी में पता चलता है कि वो बॉय या गर्ल बेबी है। और 6 मंथ में द बॉडी विल कवर्ड, द कंप्लीट बॉडी विल बी कवर्ड बाय हेयर। हम लोग के बॉडी में देखिए हर जगह छोटे छोटे हेयर्स हैं, पूरे बॉडी पे हेयर हैं, वो हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। एक बार रिकॉल करते हैं पूरा अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो मैंने बताया कि जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो सिंगल सेल जाइगोट बनता है, वो मल्टीप्लाई करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज को मरूला कहते हैं। ये ब्लास्टुलेशन के बाद ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करता है। ब्लास्टुलेशन एक सेल डिवीजन नहीं है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल है।
ब्लास्टुला फिर से रीअरेंज होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, द सेल्स इनटू इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट होकर और फेटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक फेज बनाता है। तो ये एक नॉर्मल स्केच है, ये जगह है जहां पे ये चीजें डेवलप होती हैं। ये एक एम्ब्रियो है जिसमें 16 सेल स्टेज हैं और ट्रोफोब्लास्ट है। 16 सेल स्टेज मींस मॉरुला, और मॉरुला का स्ट्रक्चर है ये। फिर हम बात कर रहे थे कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू, ये दोनों मिलते हैं तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा 4 तरह के हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। पहला है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी कहते हैं। ये एचसीजी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। सेकंड है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन का काम करता है एम्ब्रियो के लिए। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का काम करता है, ये तो हम सभी जानते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है। और दूसरा कैरेक्टर होता है इसका, ये सेक्स ऑर्गन के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, और इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट का डेवलपमेंट हो जाता है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट, थर्ड मंथ में ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, और 6 मंथ में हेयर डेवलप हो जाता है पूरे बॉडी के ऊपर। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया प्रेगनेंसी के बारे में। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन विल बी वेटिंग फॉर यू इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।